Hello everyone, welcome to the part 2 of SQL project. Part 1 is already been uploaded. You can go and check it. The link is also given in the description box. And in this video, we are going to perform some more queries. Then later we will do some advanced queries as well. Okay, so let's start it. This is our first query. Find restaurants with average cost greater than a specific value, which is I'm taking here as 3 lakhs. Okay, 3 lakhs. Fine. Now, can you tell me which column we need to select? As per this query, which column we need to select? So the columns will be restaurants. So restaurant is not directly given in the data set. What is given? You can see here. The thing which is given is restaurant ID and restaurant name. Okay. Along with these two, we will take city also. Otherwise, हम कैसे ढूंढेंगे कि restaurant कहाँ पे है? So, additional by ourselves only. So, हमें Google Map की help नहीं लेनी पड़ेगी. Okay. So, restaurant ID, restaurant name and city. Now, for the next thing, which is average cost. Average cost के लिए, which column is there? So, for the average cost, there is average cost for 2 columns. Okay. So, these 1, 2, 3, 4 columns we need to select. Okay, so let's write it. So, but at the very first we need to write use our database, and that database is food. Okay, otherwise we cannot perform our query because our data is there in the food database. Now we need to select. So select what? Select restaurant ID. Okay. Restaurant ID and restaurant name. We can take any one of them also. We can take either restaurant ID or name. That will also work. Now we need average cost for 2. Okay. Average cost for 2. Anything else? One more thing, we decided to take city to avoid Google Map. Now these columns are where? These columns are in the Zomato table. From Zomato. Okay. Now what? We want the values which are greater than 3 lakh. Okay. So we need to put a condition here. हमें वही चाहिए जिनकी cost जो है greater than 3 lakh है. So this is the condition. So for the condition, we write where clause, where restaurant, where average cost for 2 is greater than 3 lakhs. Okay. Now हमारे पास data आ जाएगा, but some absurd way में होगा. So हम उसको descending order में arrange कर लेते हैं. So I'm writing here order by clause. Okay. Order by किसको descending order में करना है? Average cost for 2 column को और descending में करना है. ठीक है? So this is it. Now run this query, run this code, and this is your result. So at the very first it is a sky, then sato, then sushi masa, and this is it. Okay, let's change this value now. If we want restaurants whose value is greater than 30,000, okay, or 1 lakh, then what will be the result? So let's run this query again, and then these all are the results. Results is increased. Okay. So this is it, and make it as it was earlier. Now come to our next query. This is our next query. It is asking top rated restaurants in each city. So what columns we need to select here? Top rated means rating column. Okay, restaurants means restaurant name column, and each city means city column. Okay, so let's select city, restaurant name, and aggregate rating, because rating column is as the name with aggregate rating. Okay, but here there is a catch. They are asking for top rated, so it means we want
maximum rating. Okay, we want maximum. Now here is again one catch. So listen carefully. If we will write it like this, okay, if we will write it like this, then what will happen from Zomato? What will happen? Listen, what kind of result we want from this query? So we basically want city-wise highest restaurant rating. Okay, means there is a city and there were some restaurants. These are the cities, city A, B, B, and then ratings. So their rating is 5, 4, 3, 8, not 8, 2, okay, 2 and 5. Okay, and the result that we want is city and rating. So city A में जो भी highest rating है, so highest rating कौन सा है? This one 5. इसका कुछ name होगा restaurant का. Then city B में जो highest rating है ये है, ठीक है. इस restaurant का भी कुछ name होगा. That will come under here. So these are our 3 columns. This will be our result basically. Okay. So city wise हम grouping कर रहे हैं यहाँ पे. अभी तक तो हमने ग्रुपिंग करनी सीखा है. सिटी वाइज हम ग्रुपिंग कर रहे हैं और हमें जो हाईएस्ट रेटिंग है वो मिल जा रहा है. ओके, सो अगर हम यहाँ ग्रुपिंग करते हैं ग्रुप बाय सिटी, तो हमें क्या एग्जैक्टली रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा. इट विल थ्रो एन एरर. ओके, सो आप उस एरर को पढ़िएगा. जस्ट ट्राई टू डू दिस. दिस इज योर एरर. नाउ आई एम टेलिंग यू इन सिंप्लीफाइड वे दैट व्हाई इट विल नॉट वर्क. बिकॉज जब भी हम कोई एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं, ठीक है, सो जितने कॉलम्स हमने सेलेक्ट किए होते हैं, द कॉलम्स विच वी हैव सेलेक्टेड मस्ट कम अंडर either inside this maximum bracket, means under aggregate function bracket, or it is associated with this group by. ठीक है, सो कैन यू टेल मी यहाँ ऐसा कौन सा कॉलम है जो ना तो मैक्सिमम में आ रहा है, एग्रीगेट फंक्शन में इंक्लूड हो रहा है, और ना तो ग्रुप बाय क्लॉज में इंक्लूड हो रहा है? सो दैट कॉलम इज रेस्टोरेंट नेम. Okay, and it is important column. We want this. So अब हम क्या करें? So इस केस में सब query work करती है. Okay, now what is this sub query? So sub query is basically हम यहाँ पे condition लगाएंगे. Okay, ये columns name ऐसे ही selected रहेंगे, max हट जाएगा यहाँ से, और हम यहाँ पे एक condition लगाएंगे where, and then where में हम एक सब query perform करेंगे जो कि bracket के अंदर होगी. नाउ ये क्वेरी अपने आप में ही एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करेगी जो एसक्यूएल क्वेरीज फॉलो करती हैं. ठीक है, इसमें सेलेक्ट आएगा, इसमें फ्रॉम आएगा, इसमें वेयर कंडीशन आएगी, एवरीथिंग विल बी लाइक दैट. नाउ ये जो आउटर क्वेरी थी इसकी टेबल थी जोमैटो. ठीक है, वही जोमैटो टेबल इस सब क्वेरी की भी होगी जोमैटो. ठीक है, सो अभी हम कोडिंग करते हैं, उसके बाद देन वी विल सी कि यहाँ पे ये जो सब क्वेरी है इसने कैसे फंक्शन किया. एक छोटी सी ट्रिक और है, नॉट ट्रिक, लॉजिक है, दैट आई विल एक्सप्लेन व्हाइल डूइंग द कोडिंग पार्ट. ओके, दिस इज इट. नाउ एग्रीगेट रेटिंग को हम एज मैक्स रेटिंग लिख दे रहे हैं, इसका एलियास नेम, बिकॉज आउटपुट में जो कॉलम शो होगा दैट विल बी मैक्स रेटिंग. ओके, from Zomato. Fine. Okay. Now, where what? Where aggregate rating is equal to, now subqueries here. So, here what we have to select? First of all, we have to select aggregate rating. Basically, aggregate rating हमें maximum चाहिए city wise. ठीक है, maximum चाहिए city wise. So that's why I am writing here aggregate rating column. And ये rating कैसी होनी चाहिए? ये rating होनी चाहिए maximum. Okay. From Zomato. Where? Now where what? Where Zomato dot city equals Zomato dot city.
नाउ दिस लाइन मस्ट बी क्रिएटिंग ट्रबल, ओके, कि ये क्या है. सो इसका मतलब है हमारे पास दो क्वेरीज हैं, आउटर क्वेरी एंड सब क्वेरी. दोनों की अपनी अपनी टेबल है, जोमैटो. ठीक है, तो हमें मैक्सिमम एग्रीगेट रेटिंग तो चाहिए. ये रेटिंग है, ये सिटी है, ये रेटिंग है, ये सिटी है. बोथ द टेबल्स आर जोमैटो. ठीक है, सो इस सब क्वेरी की अगर हम बात करें, सो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टेबल जोमैटो एंड मैक्सिमम एग्रीगेट रेटिंग चाहिए. सो इस रेटिंग में से हमें मैक्सिमम चाहिए. बहुत सारी रेटिंग्स हैं, कुछ भी मैक्सिमम लाइक 5 हमें मैक्सिमम मिल सकता है, बट वो ओवरऑल में से मिलेगा. ठीक है, बट जैसे ही हमने वेयर लगा दिया zomato.city इज इक्वल टू zomato.city, इट मीन्स यहाँ पे जो सिटी है, जो ए, ठीक है, बी सी ए, here also A B C A. सो ये जब सिटी कॉमन हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, उन सिटी में से हमें मैक्सिमम रेटिंग चूज करनी है. ठीक है, वेयर सिटी किस टेबल की है, जोमैटो टेबल की, बड़े वाले क्वेरी के टेबल की, आउटर क्वेरी के टेबल की. सिटी किसके साथ सेम हो रही है, सब क्वेरी के टेबल की सिटी के साथ. ठीक है, सो व्हेन दिस ए ये जब सब आपस में इक्वल हो जाएंगी, उनमें से जो मैक्सिमम रिजल्ट आ रहा है, उनका जो मैक्सिमम रिजल्ट आ रहा है, दैट विल बी इक्वल टू द एग्रीगेट रेटिंग. इज इट क्लियर? ओके, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो वापस जाकर के इसको दोबारा फिर ट्राई करिए देखने का. स्टिल इफ इट इज नॉट क्लियर, प्लीज कमेंट इट इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज कमेंट बिलो. ओके, आई विल मेक सेपरेट वीडियो एंड क्लियर इट अगेन. सो नाउ लेट्स रन दिस. Select everything. Okay, so here you can see that city wise जो maximum rating का restaurant था वो आ गया. Like in this city, not able to pronounce it, like Mandal. Okay, Mandal city and Oma restaurant है वहां पे, और जो उसकी highest जो rating है वो है 4.9. ठीक है, तो इस सिटी में यही रेस्टोरेंट ऐसा है जिसकी हाईएस्ट रेटिंग है. आई होप इट्स क्लियर. ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट क्वेरी. So open the new file from here and writing, paste it. Okay, so this is our next query. It is saying restaurants with low cost but high rating. वो रेस्टोरेंट्स हमें चाहिए जिनके कॉस्ट लो है लेकिन मतलब चीपेस्ट भी और रेटिंग भी, खाना भी अच्छा मिल रहा है. ठीक है, सो मीन्स हमें यहाँ दो कंडीशंस है. अभी इस कंडीशन को थोड़ा और क्लैरिफाई कर लेते हैं कि लो कॉस्ट में कितना लो. सो लेट्स हैव जहां पे जो कॉस्टिंग है वो हमारी लेस देन है 1 लाख. ओके, 1 लाख, एंड जो रेटिंग्स हैं वो ग्रेटर है किससे, 4 से ग्रेटर है. ठीक है, ये मैंने एडिशनल इसमें ज्वाइन कर दिया, ऐड कर दिया, सो दैट और क्लैरिफिकेशन मिल जाए. ठीक, अब हमें क्या करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू सेलेक्ट विच कॉलम्स. रेस्टोरेंट्स, इट मींस रेस्टोरेंट नेम और आईडी. कॉस्टिंग कॉलम, ओके, रेटिंग कॉलम, दीज आर द कॉलम्स. सो लेट्स सेलेक्ट रेस्टोरेंट नेम, comma, aggregate rating, comma, cost column, it is named with average cost for 2. Okay, from ये सब टेबल कहाँ पे existed है, so it is existed in the Zomato table. Now where we need to put this condition, simple condition, where average cost for 2, okay, is lesser than 1 lakh, and दोनों conditions हमें साथ में चाहिए, so that's why we are using and. Okay, so and rating, aggregate rating is
greater than 4. Okay, and this is it. Now run this and you will get the restaurants whose aggregate rating, and this is. So what we can do, we can arrange it in a more cheapest form. Okay, so where let's say order by cost. Okay, average cost for 2. Okay, अभी हमें increasing order में, it mean ascending. ठीक है, इससे हमें और cheapest restaurant मिल जाएगा और रेटिंग तो अच्छी है क्योंकि 4 के above है. So there is something, it is a data mistake. 0 तो हो ही नहीं सकती है कॉस्ट, यहाँ पे इन्होंने null की जगह पे 0 कर दिया है. ठीक है, so इसको इग्नोर करते हैं फर्स्ट 3 रोज. नाउ सेकंड पे आते हैं. सो हियर ममाज बॉय रेस्टोरेंट जिसकी रेटिंग 4.5 है एंड जो कॉस्ट है इट इज 10 ओनली. और अगर हम इसको डिसेंडिंग कर देते हैं देन व्हाट विल हैपन, आफ्टर डूइंग इट डिसेंडिंग, सो हायर कॉस्ट जो कॉस्टलियर है रेटिंग 4 रेटिंग के अंदर, इसमें 7000 है. ठीक है, सो दिस इज इट. Now come to our next query. So this is our next query. They are asking for cities with the most vote. Okay. So most vote means बहुत सारे cities हैं जिनमें बहुत सारे votings गए हुए हैं. So if you see the data set here, you can see that suppose Makati city 2 times it is written here. Somewhere else also it has been there. Okay. So Makati city 314 प्लस 591, यही टोटल वोट्स हुए ना मैकाती सिटी के. और भी जो नीचे हैं उनको भी अगर आप ऐड कर दो तो टोटल वोट मैकाती सिटी के इतने हुए. सिमिलरली जो नेक्स्ट सिटी है सांता रोजा, सपोज उसके कुछ वोट्स होंगे, फिर उस नेक्स्ट सिटी उसके कुछ वोट्स होंगे. तो सिटी वाइज कहाँ पे मैक्सिमम वोट है वो हमें डेटा चाहिए बेसिकली. ओके, सो हाउ वी विल राइट द क्वेरी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट सिटी तो चाहिए. व्हाट एल्स, वी वांट द सम ऑफ वोटिंग्स, sum of votes. Okay, now this is it, cities and votes. Now these data is it is in the Zomato table. Okay, now we want city wise data, so group by city. ठीक है, अब थोड़ा absurd way में आ सकता है डेटा, so we have to write it proper order. एक order में हमें चाहिए. So order by, किसके order by, सो इसको हम नाम दे देते हैं सम ऑफ वोट्स का एज मोस्ट वोट्स. ठीक है, सो ऑर्डर बाय मोस्ट वोट्स, जहां पे ज्यादा वोट हो वो सिटी सबसे ऊपर शो हो, तो डिसेंडिंग. ठीक है, नाउ रन दिस क्वेरी एंड हियर इट इज. सो न्यू दिल्ली हैज द मैक्सिमम वोट. ठीक है, then Gurgaon second, then Noida second. Okay, so can you see here we have used this aggregate function sum. Okay, and city हमारी इंक्लूड हो गई ग्रुप बाय में, और जो ये वोट हमने इसको तो यूज किए थे. यहाँ कोई ऐसा कॉलम नहीं है जो कहीं यूज ना हुआ हो जैसा प्रीवियस क्वेरी में हुआ था. ओके, आई होप इट्स क्लियर टिल हियर. नाउ कम टू आवर लास्ट क्वेरी. So it is saying restaurants offering both table booking as well as online delivery. It is easy again. So what we have to select? We have to select restaurant name, comma. Okay. What else? Let's see the name of the column. And these column has table booking and has online delivery. So has, so right here Zomato. Okay, now has table booking, comma, has online booking delivery. ठीक है, this is it. Now what we want, so where
हैज टेबल कैसे हो, वेयर हैज टेबल इक्वल्स टू यस, ये प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। एंड व्हाट, हैज ऑनलाइन डिलीवरी इज ऑल्सो यस, ऑल्सो यस। सो ये जाएगा हमारा and here you can see the result. Okay, ये वो रेस्टोरेंट्स है जहाँ टेबल बुकिंग भी है और ऑनलाइन डिलीवरी भी अवेलेबल है। So guys, this is it for this video. I will make one more part of this Zomato data set. अगर सारा कुछ कवर हो गया then one more part, अगर नहीं कवर हुआ, कुछ क्वेरीज रह जाएंगी जो important होंगी, then I will make one another part. So there will be total 4 parts. Okay, so this thing I will clear in the next video. So stay tuned to my next video, and there I will discuss more queries. So keep practicing. Take care. Bye bye.